ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਸਾਂਝਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੋਸਟ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਊ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਵਰਕਸ। ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 1993 ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 9 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੋ 94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਰਮਨੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਰਮਨੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਰਮਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਹੀ ਗਾਟ ਕਨਵਿਕਟਡ ਫੋਰ that bomb blast that happened in 93 in Delhi। 95 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ 6 ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਔਰ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ। ਔਰ 95 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2006 ਤੋਂ ਅੱਗੇ 2011-12 ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਰੋਂਗਫੁਲੀ ਕਨਵਿਕਟ ਕਰਕੇ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਐਵੀਡੈਂਸ 133 ਵਿਟਨੈਸ ਜੋ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜੋ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ Colin Gonsalves, who is a founder of Human Rights Law Network in India. He is an engineer from Bombay. So ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਬੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ ਹੀ ਵਰਕਡ ਐਜ਼ ਏ ਲੇਬਰ ਲਾਇਰ, criminal lawyer, and many other fields that he covered, which includes lawyer for human rights. And then he went to UK, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UK ਗਏ। UK ਦੀ ਜੋ ਮਿਡਲਸੈਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੰਟਲੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਗੋਨਜ਼ਾਲਸ ਹਨ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਐਜ਼ ਏ ਸੀਨੀਅਰ ਲਾਇਰ। ਸੋ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਗੋਨਜ਼ਾਲਸ,
welcome to our studio. Thank you. And thanks for listening our last minute request for an interview. So आपके साथ बात जो होगी हिंदी में एंड इंग्लिश में होगी और दर्शकों ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ. ਸੋ ਆਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ. ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ. So thank you for coming to our studio. Thank you for inviting me. It's a pleasure. It's an honor to come here. Thank you. डॉक्टर साहब आपने जो अपना शुरू का जो career है, how did you start it and when did you thought that you were gonna be a lawyer? Well, मेरा पिताजी इंजीनियर था. तो जब मैं स्कूल में था मैंने सोचा कि इंजीनियरिंग के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जी. और उस वक्त सिचुएशन थोड़ा अलग सा था. आज जैसे ज़माना नहीं था. उस वक्त के काउंसलर्स थे. अभी काउंसलर्स है, एडवाइज़र्स है, स्टूडेंट काउंसलर्स होता है. उस वक्त कोई नहीं था गाइड करने के लिए. मेरा पिताजी फॉरेन में था, मैं इंडिया में था जी. तो हमें खुद का रास्ता निकालना पड़ा. तो मैंने सोचा कि ठीक है, मेरा पिताजी इंजीनियर है तो मैं भी इंजीनियर बन जाऊंगा. तो मैंने आईआईटी बॉम्बे में अप्लाई किया जी. और इत्तेफाक से मैंने पास किया. रिज़ल्ट ठीक से आया. तो सिविल इंजीनियरिंग बॉम्बे आईआईटी में शुरू किया और 5 साल के लिए मैंने किया जी. लेकिन मेरे ख्याल से मेरा तीसरा साल से मुझे लगा कि इंजीनियरिंग हमारे लिए ठीक नहीं है. तीसरा साल में हमें लगा कि ये हमारा लाइन का साइंस नहीं है, ये हमारा लाइन का टेक्नोलॉजी नहीं है. नहीं करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए. लेकिन कुछ और क्या करे जी, वो मेरा समझ में नहीं आया क्योंकि मैं यंग भी था. तो मैंने 5 साल ख़त्म करने के बाद जब मैंने पास किया आईआईटी बॉम्बे तब मेरे मन में ये क्लियर था कि मैं इंजीनियरिंग काम नहीं करना चाहता जी. तो मैं सोशल वर्क का लाइन में गया. पास होने के बाद मैंने इस्लाम मूवमेंट में सक्रिय था. गरीबों का झुग्गी झोपड़ी जब बेदखली होती थी जी जी, बुलडोज़र से आके सभी का इवेक्शन करते थे सरकार, तो मैंने उसमें काफ़ी सक्रिय भाग लिया विरोध करने में. तो शुरुआत से मेरा ओरिएंटेशन था सोशल ओरिएंटेशन. जी. और लेट 1970s में मैंने डॉक्टर सामंत के संपर्क हुआ. डॉक्टर सामंत एक बहुत ही मिलिटेंट ट्रेड यूनियन लीडर था बॉम्बे का जी. जिसका यूनियन में करीब 10 लाख 15 लाख कामगार थे. कैरिस्मेटिक लीडर था जी. और मेरा पुराना संपर्क भी था उसके साथ. तो मैंने ज्वाइन किया डॉक्टर सामंत का यूनियन. और ज्वाइन करने के बाद मैंने लीगल काम उसका यूनियन में लेना शुरू कर दिया जी. और मैंने लॉ का स्टडी भी शुरू कर दिया. अच्छा. तो उससे मेरा शुरुआत हुई. डॉक्टर सामंत का यूनियन मेरा डिग्री होने के बावजूद भी मुझे मेरा पगार था 500 रुपया पर मंथ फॉर 5 years, 500 रुपीज़ पर मंथ. लेकिन बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, बेस्ट टाइम, क्योंकि मैंने कामगारों का जो हालत है मुझे देखने को मिला. मुझे मिलिटेंसी का मतलब क्या होता है मैंने देखने को मिला. किस तरह से मतलब मिलिटेंट स्ट्रगल ट्रेड यूनियन मूवमेंट में होना भी ज़रूरी है. सिर्फ ये नहीं कि कानून के आधार पर चलना, क्योंकि उस वक्त बॉम्बे में कानून बहुत ही कमज़ोर था और लेबर कोड, इंडस्ट्रियल कोड्स बहुत ही कमज़ोर थे. तो स्ट्राइक करना और एजिटेशन करना, घेराव करना और सोशल मूवमेंट जैसे इन्वॉल्वमेंट में हो, तो उससे मैंने थोड़ा बहुत सीखा कि सोशल मूवमेंट करे कैसे जी. क्योंकि सोशल मूवमेंट से ही परिवर्तन होता, ना सिर्फ कानून से या सरकार के साथ बातचीत करने से, मोबिलाइज करने से, ऑर्गेनाइज करने से और सोशल मूवमेंट में हिस्सा लेना जी. यंग लोगों को ये सीखना बहुत ज़रूरी है. तब ह्यूमन राइट्स प्राप्त हो सकता है जी. नहीं तो ह्यूमन राइट्स मिलना बहुत मुश्किल है सोसाइटी में जी. तो मैंने इस तरह से मैंने वकालत शुरू किया. अच्छा. बॉम्बे हाई कोर्ट मैंने 10 साल के लिए प्रैक्टिस किया और 1999 में मैं बॉम्बे हाई कोर्ट छोड़ के मैं सुप्रीम कोर्ट आ गया. ठीक है. और अब मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ. ठीक है जी. और
when did you started working with as a, आपने कब शुरू किया कि मैं जो ह्यूमन राइट्स की बात है उसके ऊपर, क्योंकि आप उसके पहले आप लॉ के आई मीन लेबर लॉ कर उसमें काम कर रहे थे और मैनी अदर फील्ड्स दैट यू वर वर्किंग, पर व्हेन आपने कब सोचा कि मैंने ये जो ह्यूमन राइट्स जो आप डेफिनेटली वायलेशन हो रहा है जो आपने देखा होगा, तो कैसे आपने डिसाइड किया? मेरे ख्याल से शुरू से हुआ था, क्योंकि हाउसिंग राइट्स एक ह्यूमन राइट है। तो हालांकि उस वक्त मैं वकील नहीं था, लेकिन आई वाज फाइटिंग फॉर ह्यूमन राइट्स ऑफ हाउसिंग ऑफ द पुअर, राइट टू हाउसिंग। जी। उसके बाद लेबर राइट्स आल्सो इज अ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेबर राइट्स, लेबर लॉ, दीज आर ऑल ह्यूमन राइट्स इश्यूज। जी। तो मेरे ख्याल से शुरू से मैंने ह्यूमन राइट्स लिया, लेकिन खास पिछले 15-20 साल से जब मैं हाई कोर्ट में था, मैंने कई ह्यूमन राइट्स केसेस लिया था। जी। टॉर्चर का केसेस, रेफ्यूजी राइट्स का केसेस, एविक्शन का केसेस वगैरह, इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन का केसेस, ये सारी ह्यूमन राइट्स केसेस है। जी। और सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद मेरा पाथ ऑफ वर्क थोड़ा व्यापक हो गया, क्योंकि अब मैं पूरा देश को देख रहा हूँ और पूरा देश से अपील्स आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो हमारा काम जो है काफ़ी बढ़ गया सुप्रीम कोर्ट आने के बाद। जी, टॉर्चर केसेस, डिसेबिलिटी राइट्स केसेस, ट्राइबल राइट्स केसेस, जी, HIV एंड द लॉ, जो HIV पॉजिटिव लोग हैं उन लोगों का केसेस है, women's cases, violence against women's cases, trafficking cases, sexual abuse of children's cases. Yes. तो अलग अलग किस्म के केसेस सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से हमारा ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क का वेबसाइट में अगर आप जाओगे, HRLN.org, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम का केसेस है। जी जी जी। अगर मैं कनाडा में होता तो कनाडा सुप्रीम कोर्ट में ये काम नहीं कर सकता क्योंकि कनाडा सुप्रीम कोर्ट का विजन जो है बहुत ही नैरो विजन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका अगर आप देखोगे बहुत ही नैरो विजन है, वहाँ पे केसेस करना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारा संविधान जो है मेरे ख्याल से पूरे दुनिया के देशों का तुलना अगर करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, बिकॉज वी कैन डू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका जो कहते हैं, इसका मतलब यह है कि कोई भी कर सकता, आप कर सकता है, मैं कर सकता है, कोई टीचर कर सकता है, कोई वर्किंग क्लास गार्डनर भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कर सकता है। जी जी। अगर आप देख सकते हो कि कुछ सेक्शन के लिए अन्याय हो गया, तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं और पिटिशन दाखिल कर सकता है। जी, मैंने देखा कि रेलवे स्टेशन पर कांस्टेबल ने बच्चों को मारा बुरी तरह से, तो कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक कर सकता है केस। जी जी, कोई भी, ये बात तो बिल्कुल सही है, कोई भी कर सकता है। पर आई विल गेट इनटू दैट एज वेल। मेरे कुछ सवाल होंगे उसके ऊपर भी कि हो तो सब कुछ सकता है पर हो नहीं रहा, क्योंकि आई विल टॉक ऑन दैट। बट व्हेन डिड यू, जब आपने स्टार्ट किया लॉयर का प्रैक्टिस शुरू किया, डिड यू फाइंड द जस्टिस सिस्टम इन इंडिया इज वर्किंग? देखिए, एक तौर से अगर देखा जाए तो लीगल सिस्टम बहुत ही वीक है, कमज़ोर है, क्योंकि गरीब व्यक्ति को कोर्ट के अंदर जाना मुश्किल है। जी। 750 million persons are earning less than $1 Canadian a day. 70% लोग हैं जो $1 Canadian का पर डे के नीचे उनका तनख्वाह है। जी। तो बस फेयर निकाले कैसे, टैक्सी से जाए कैसे, एडवोकेट से मिलना कैसे, जी, उनका फीस कैसे देना, जी जी जी, टाइपिंग का खर्चा कौन देगा, तो नामुमकिन है। तो लीगल सिस्टम इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी हार्ड for poor people. It is an anti-poor system. Everywhere in the world you see, everywhere in the world. The legal system is meant for capitalists. Legal system is meant for upper middle class. Legal system is meant for rich. Automatic exclusion of the poor ये होता है हर system में, और Indian system में it is always happening. जी. This is one side. Other side, अगर कुछ लोग हैं, कुछ ग्रुप है और ये ग्रुप को थोड़ा सपोर्ट मिले,
तो then they can organize, lawyers can organize, and lawyers can take up cases of injustice. Potential भी है, लेकिन उस पोटेंशियल को यूज करने के लिए लॉयर्स को बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा जी, और थोड़ा रिसोर्सेज भी जमा करना पड़ेगा फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रॉम वेल विशर्स. यू हैव टू कलेक्ट द मनी एंड यू हैव टू यूज द मनी टू फाइट फॉर द पुअर. जी जी. तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीचर भी है, ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक अप्रोच भी है. जी जी. अगर ये ग्रुप नहीं है, लॉयर वकीलों का ग्रुप अगर नहीं है ये काम करने के लिए, तो साधारण वकील के पास अगर कोई जाए तो कुछ नहीं होगा, फेल होगा निश्चित. जी. और इस ग्रुप को सस्टेन करने के लिए भी मुश्किल है. जैसे हमारा ग्रुप सस्टेन करना बहुत मुश्किल है. इधर से पैसा जमा करना पड़ेगा, इधर से लेना पड़ेगा, इधर से भीख मांगना पड़ेगा, फिर आप कर सकते हो काम. जी जी. ऐसा है. ठीक है डॉक्टर कॉलिन, आप छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद आपसे बातचीत ऐसे जारी रहेगी. मिलते हैं जी एक ब्रेक ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਚਟਪਟੇ ਤੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ. ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਘਰ ਵਰਗੇ ਸਵਾਦ ਲਈ ਕੈਟਰਿੰਗ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਲੰਚ ਬਫੇ ਲਈ ਆਓ. 200 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹਾਲ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ. कॉल करो 403-568-5555 403-568-5555. ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਸਾਂਝਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲਿਨ ਗੋਨਜ਼ਾਲਸ. ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ खास तौर पे कनाडा की फेरी ते आए हुए हैं दिल्ली तो. सो डॉक्टर गंजालस, वी वर टॉकिंग अब हम लोग बात कर रहे थे कि जुडिशल सिस्टम जो है, जहाँ जस्टिस सिस्टम है, वो कैसे काम करता है. आपने बताया कि जस्टिस सिस्टम काफ़ी हद तक फेल होता है इंडिया में. कोई भी आदमी है, कोई भी गरीब आदमी है चाहे अमीर आदमी, अमीर के लिए तो सब वेन्यू खुले हैं, सब दरवाजे खुले हैं. गरीब आदमी जिसके साथ अन्याय हुआ वो अगर जस्टिस सिस्टम के पास जा ही नहीं सकता तो उसकी पुकार कौन सुनेगा? एक्चुअली उनकी पुकार कोई नहीं सुन सकता है, कोई नहीं सुनता है इंडिया में. हकीकत ये है. हालांकि ग्लोबलाइजेशन हो गया इंडिया में, मॉडर्न स्टेट हो गया, 8% GDP ग्रोथ रेट है जी. फिर भी ग्रामीण इलाकों में अगर दलित महिलाओं के ऊपर अगर बलात्कार हुआ तो कोई सुनने वाला नहीं है. उनका हिम्मत नहीं रहेगी पुलिस स्टेशन में जाना और कंप्लेंट करना, और कंप्लेंट अगर करेगी कोई कुछ करने वाला नहीं है जी. कोई वकील उसके पास आने वाला नहीं है, कोई जज उसके पास आने वाला नहीं है पूछने के लिए कि क्या हो गया बहन जी, क्या हुआ आपको. तो नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस हमारे देश में 90% केसेस ऐसे हैं जो मिनिमम वेजेस का पेमेंट नहीं मिलता. कौन पूछेगा? सबको मालूम है जी. सब जज साहब, सब अधिकारी, सबको मालूम है जी कि नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस है. जी जी. तो वैसे बहुत सारी इश्यूज है. ट्रैफिकिंग का इश्यूज, बच्चों को ट्रैफिकिंग फॉर सेक्स वर्क, जी जी. ये हमारे देश में ग्रैंड कल्चर, ग्रैंड सिविलाइजेशन, ग्रेट हिस्ट्री ऑफ इंडिया. लेकिन आप वास्तविकता में क्या है? चिल्ड्रन आर बीइंग ट्रैफिक्ड, पेरेंट्स आर सेलिंग देयर चिल्ड्रन फॉर फूड, दे डोंट हैव फूड. टेक माई चाइल्ड, 300 rupees, 400 rupees, टेक माई चाइल्ड. So what is this great Indian culture and civilization? Who will look at that woman and say, okay, take some food? We told Prime Minister Manmohan Singh, former Prime Minister, 70 million tons of grain is in the granaries of India. 70 million tons. Your children are dying of hunger. Open and give them the grain. No. You pay. You want the grain, you pay. So who will hear the cries of the people of India? And that is the reason why in India you have uprising. Because like the old Rajas, nobody is willing to listen.
मैं like मेरा the old emperors, nobody मेरा is willing to मेरा listen. आपने बोला इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज द बेस्ट एंड एवरीथिंग, Correct. पर वी डेफिनेटली हैव सम क्वेश्चंस ऑन दैट कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि एक आम आदमी है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, जो लॉ है लॉ सबके लिए बराबर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा। उस पर थोड़ा आपसे और बात होगी। उससे पहले आपने सुना होगा मिस्टर देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर का जो केस है, जैसे और भी बहुत सारे केस हैं जो जिनको फांसी की सज़ा हुई। कोई भी क्रिमिनल केस होता है उसका जाहिर है कि वो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, जैसे किसी का किसी ने मर्डर किया, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जहाँ ऐसे कुछ केसेस होते हैं। देवेंद्र पाल भुल्लर जी को जो कन्विक्ट किया उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनका कोई आंसर नहीं मिल रहा है। फ्रॉम अ लॉयर साइड, हाउ डू यू सी दिस केस? See, Devendra Pal Singh Buller's case is a case of grave injustice. और ये injustice के बारे में पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कई और जगह जाना, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट खुद पढ़ना। क्योंकि 3 जजेस में से जो सीनियर मोस्ट जज था MB शाह, उसने साफ साफ लिखा कि देवेंद्र पाल सिंह बुल्लर के बारे में अन्याय हो गया। क्योंकि उस वक्त वो पुराना टाडा टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट था जी, और उस कानून अनुसार कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर के बेसिस पर, के आधार पर, यू कैन कन्विक्ट अ मैन एंड सेंड हिम टू डेथ। इवन द ब्रिटिश नेवर अलाउड कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर बिकॉज द ब्रिटिश न्यू दैट इंडियन पुलिस का विशेषता ये है कि टॉर्चर करके आपका सिग्नेचर लेगा on a confession. So even the British never trusted the Indian police. In the Indian law, IPC, Criminal Procedure Code, it is not allowed confession to police officer. Confession to judge is allowed, but not confession to police officer. लेकिन टाडा एक एबरेशन था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है जी। टाडा में ये प्रोविजन था, यू कैन गिव कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। तो MB शाह ने उस कन्फेशन के ऊपर देवेंद्र पाल सिंह alleged confession, MB Shah has commented a lot. And he said the main point of the case, main point of the conviction is the confession to police officer. जी. And he says this is not worth it. It is a confession taken by force. And therefore MB Shah ने निर्णय लिया, I will acquit this man. जी. सजा की अलग बात होती है. I will not even convict. I will acquit this man. And I will set him free. जहाँ तक पुलिस द्वारा जो स्टेटमेंट ली गई है देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की, we all know he is a professor. Yes. And पुलिस ने जो स्टेटमेंट दी है वो बोले कि इसने अपना थंबप्रिंट लगाया। Do you agree with that कि एक पढ़ा लिखा आदमी, एक प्रोफेसर आदमी वो अपना थंबप्रिंट यूज करेगा? No, not possible. And that is the reason why Justice MB Shah found fault with the confession. First of all, to look at a confession to a police officer, that itself is wrong. Nowhere in the country, under no law, is it being done today. टाडा तो रिपील हो गया, और टाडा रिपील करते समय पार्लियामेंट ने क्या कहा, ये ड्रैकोनियन लॉ है. So Buller was convicted under draconian law. So all the convictions you should set aside. Now you are coming to your senses. Parliament is coming to its senses now. After you sentence the man to death, कि ये कानून ड्रैकोनियन कानून है, इसको निकालना जरूरी है, इसको रद्द करना जरूरी है, इसको रिपील करना जरूरी है. Now Parliament has come to its senses. That is the thing. You'll send a man to death on the basis of a draconian law. That is the thing. What can you say? This is Indian society, Indian government, Indian legal system. Ji, how did you get into contact with the Jaswant Singh Khalda charity? See, I've been doing a lot of human rights work in India for many years.
I also have a legal aid center in the Punjab, so I do some cases from Punjab. But I came into touch with the Kalra family only after I came to Canada in 2011. जी वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे इनवाइट किया कनाडा को जी और मैंने जैसे मैं आज कर रहा हूँ वैसे मैंने टोरंटो से ओटावा, एडमिंटन, कैलगरी, वैंकूवर मैंने इस एरियाज़ में लेक्चर किया और मैंने वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सीखा और तब हमने सोचा कि ज़रूरी है कि इंडिया में एक संगठन बनाओ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट. जी So then they put me in touch with Navkiran Kaur, जी Jaswant Singh Kalra's वाइफ daughter, sorry daughter yes and Paramjit Kaur. Kaur his wife yes. So then we decided to set up the Kalra Center for Human Rights Defenders. And the family also blessed the center and said, go ahead. So that's how I got in touch with them. In Mr. Jaswant Singh Kalra, what did you found the way he got killed, especially after delivering his speech in Parliament in Canada? Do you think any justice is going to happen on that side too? See, I am doing those cases in Supreme Court now. The disappearance cases came before NHRC. जी और दुख की बात यह है कि NHRC ने सिर्फ compensation की बात की. And compensation, you will not believe, the NHRC insulted the dead. Insulted the dead agree. by giving them 2.5 lakhs compensation. In some cases only 175 lakh. Justice Anand was the chairperson of NHRC. जी जी And he was a very clever judge, so he knew exactly what he was doing, that he was issuing an insult to the Sikh community. Why don't you say zero? Yeah. Don't give any money. Who wants your money? Yes. After so many years, you are giving crumbs to a dog. That is challenged now in Supreme Court. And Paramjit Kaur Kalra is very active in that also. And some other people are active. So we are challenging that compensation. Why not 10 crores? Yeah. Why not 25 crores per person Yes. for the suffering and pain? But do you think there should be any price tag whose son or father or daughter lost? See, there is no price tag. For life, there is no price tag. Main demand of the Sikh community is not money. Not 1 rupee. Who killed my son first, you tell me. Yeah. Tell me the truth, who killed my son? Yeah. Second, when he was killed, you tell me which police officer decided not to give the body to me. Yeah. He's dead. He is no use to you anymore. Absolutely. Correct? Even if he was a terrorist, even if I'm saying, Yeah. even if he was a militant, he is no use to you now, his dead body. Give it to the family. I can do my rights, my religious rights with the dead body. Then I will feel peace as a family member. My dead son will feel peace. Which police officer decided cruelly, yeah, take it and burn it? Which happens in thousands of yes. cases. These are not police officers, these are not human beings, these are animals. The worst kind of animals. The most vicious kind of animals. Who believe they can come, put a gun to your head, shoot you, take your body, burn it. And never let you know what happened. And worse is that the legal system will not bother. When it comes to minorities, Muslims, Sikhs, the legal system will close its eyes. The legal system will not care. And they Judges will not care. And they did it. Yeah. They did it. Yeah. That is the confidence of the police officer कि कोई हमें पकड़ेगा नहीं. कोई ऐसा कोर्ट नहीं है हमारे देश में, कोई ऐसा जज नहीं है जो हमें पकड़ने का हिम्मत है. जी. That is a confidence.
Otherwise, how can they behave like these animals? And If the constitution is there, how to behave like this? and do you think that confidence built in them by the justice system? Yes. Then do whatever you want. See, all that it is necessary. Terrorist शब्द इस्तेमाल करना. जज साहब, इसके लिए कोई न्याय नहीं हो सकता है क्योंकि ये टेररिस्ट था. कोई पूछेगा नहीं. What is the meaning, sir? What do you mean by terrorist? क्या उसका कुछ क्रिमिनल केसेस का बैकग्राउंड था? क्या आपके पास लिस्ट है टेररिज्म का, टेररिस्ट का? क्या show me the evidence that he was terrorist? You decided to kill him? You became judge and jury? You became God because a pistol was in your hand. You became God. So you decided. You did not bring him to the legal system. पकड़ने के बाद कानून कहता है कि जज साहब के सामने खड़ा करना. You decided that you were the judge. You decided that you were the jury. You decided that you had the power of God. God had given you the power to kill. Yeah. So tell me, Mr. Officer, show me the evidence. All these people who are killed, we told Justice Anand in NHRC, look into the issue. He is admitting that he has killed him. Look into the issue. कि उसका ट्रायल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. जी जी जी. जस्टिस आनंद ने हाथ जोड़ के कहा नहीं, आई एम ओनली गिविंग कॉम्पनसेशन. Is that what the NHRC is for? National Human Rights Commission? We'll be talking on that too. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद we're going to talk how Mr. Buller his death penalty was waived. So उसके बारे में आप साहब से बात करते हैं. ਬੈਸਟ ਬਾਏ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਨੋਖਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਲਈ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ. ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਫਰਨੀਚਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਪਲਾਂ ਲਈ. ਬੈਸਟ ਬਾਏ ਫਰਨੀਚਰ, the perfect homemaker. Finance available for 6 months with 0% interest. Call 403-250-6661. 403-250-6661. ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਸਾਂਝਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲਿਨ ਗੋਨਜ਼ਾਲਸ, ਸੀਨੀਅਰ ਲਾਇਰ ਐਟ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली. सो डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे ये जुडिशल सिस्टम काम करता है कि पुलिस के हाथ में इतना पावर दे दिया गया है कि वो खुद ही जज है, खुद ही वकील है और खुद ही वो एक, मैं तो कहूँगा जल्लाद भी वही है जो गन के साथ जो किसी को भी अरेस्ट किया उसको मार देता है. प्रोफेसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर के केस में there is so many gray areas, and not just Professor Dwinderpal Singh Bhullar, many other cases. How Professor Dwinderpal Singh Bhullar जो convict हुए थे, उनका जो मौत का सजा है वो कैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में तब्दील हुआ, इसकी थोड़ी, क्योंकि स्टोरी बहुत लोगों को मालूम नहीं है, थोड़ा आप बताएं कैसे हुआ. ये समझना ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट तक फेल होने के बावजूद देवेंद्रपाल सिंह भुल्लर का डेथ सेंटेंस आज रद्द हो गया. ये हुआ कैसे? सो व्हाट हैपेंड वाज समथिंग लाइक मैजिक. क्योंकि लास्ट दरवाज़ा बंद हो गया जी. सुप्रीम कोर्ट, लास्ट कोर्ट ऑफ अपील ने कंफर्म कर दिया डेथ सेंटेंस. जी जी. तो देवेंद्रपाल सिंह भुल्लर और दूसरे जो लोग थे साथ में, उनका डेथ सेंटेंस रद्द हुआ कैसे, ये मैं बताना चाहूँगा. क्योंकि हमारा कानून में एक है, संविधान में एक है, आर्टिकल है जी, कि कन्विक्शन कंफर्म होने के बाद कॉन्विक्ट प्रिजनर का राइट है प्रेसिडेंट साहब के सामने मर्सी पिटिशन दाखिल करने का. जी.
So they all made mercy petitions to the president. President साहब ने delay कर दिया 3 साल 5 साल 10 साल. President delayed. What's the timeline? See, there is no timeline, but you must do it quickly. Under the judgments of the court, there must not be unreasonable delay. So generally, within 1 year, 6 months, 1 year, 1.5 years, depending on the facts of the case, you must quickly make the order. But in Buller's case, it's been like 14, 15 years. Yeah. In all these cases, Rajiv Gandhi assassination case, 15, 20 years. In the other cases, Veerappan gang case, 10, 12 years. So this was the parampara. President also was hesitant to touch. क्योंकि मेरा decision से इसका जान चला जाएगा. So they were also delaying. So we took the cases before the president. Not only me, many lawyers. We took the cases before the president, before the chief justice. But just one question raised from here. जो अगर president ऐसे सोच रहे हैं और उसका डिपार्टमेंट ऐसे सोच रहा है और दूसरा डिपार्टमेंट जिसके अंदर से ये डिसीजन जाना है, अगर वही लोग ऐसे सोच रहे हैं, don't you think they are already playing with somebody's life who is already in the prison and waiting for his death? Thank God they were playing with their lives. Because of the delay, we are getting freedom. It is another angle, yes. Unusual situation, no? Yeah. On the one hand, they are taking long. Because they are taking long, prisoner is every day thinking, am I going to live? Am I going to die? The sword is hanging over him. Right. So on the one side, he is suffering. On the other hand, because they are taking time, we are able to go and make a constitutional challenge in Supreme Court. कि delay की वजह से you commute from death to life. You understand? Little bit contradictory. It is contradictory. Yeah. Suppose the president had acted quickly, they would have been dead today. True. Because the president delayed, we are able to make the argument. Anyway, Justice Sathashivam Saab was one of the finest judges I have come across in my career. Inspired man. I think he understood this death sentence business for India now, it should be finished once and for all. He cannot say it. Yeah. Because there is a constitution bench decision, Bachchan Singh's case. The death sentence is constitutionally valid. So he cannot openly say, judges cannot openly say, but I think many judges today in Supreme Court and High Court, many judges, they don't want death sentence anymore. They are fed up. Because they have seen same fact, I will give you death sentence, I will not give you death sentence, depends on judge. Right. And in the Supreme Court at one stage, there was one judge who gave 60% of all death sentences. 60% of all death sentences, one judge, hanging judge. Wow. And there was a judge like M.B. Shah, जो बुलर का केस में था. He never gave a single death sentence. There were many judges who never gave a single death sentence. So क्या आपका fate, your fate depends on which judge you are going before. Whether I live or die will depend on कि ये जज साहब के सामने जाएगा या वो जज साहब के सामने जाएगा. जी, तो देवेंद्रपाल सिंह जी का केस फिर कैसे आगे चला? How that happened? See, one judge, M.B. Shah, said nothing. Acquit. 2 judges were the hanging judges. You understand? Temperament of judge, attitude of judge, liking, dislike of judge. It cannot be, no. Life cannot go. Legal system cannot depend on personality of the judge. And that is what the Indian system is. Depends on personality. So, आखिर में Sathashivam Saab in a historic judgment, Shatrughan Chauhan case, historic judgment. If there is unreasonable delay, death sentence will be cancelled. And on that basis, सारे cases में, शत्रुघ्न चौहान में 10-12 cases थे उस ग्रुप में. उसके बाद बुलर का केस आ गया, उसके बाद राजीव गांधी असैसिनेशन का केस आ गया, उसके बाद कई और केसेस आ गए. सारे केसेस में डेथ सेंटेंस रद्द हो गया. तो बुलर साहब इज सेफ. Yeah, thank God. Yes. He is safe, thank God.
Yeah. Thank God and thank the Chief Justice Satashivam Sam. Yeah. Because perhaps God has acted through him also in his inspiration. Who knows? But he was an inspired judge. He has retired now. So जब वो शत्रुघ्न का केस आया, चौहान का केस आया, उसके बाद का जो वो बुल्लर साहब से कैसे कनेक्ट हुआ? और ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया क्योंकि शत्रुघ्न चौहान में मेन प्रिंसिपल जो है डिक्लेयर हो गया. एनीथिंग तो जब ये डिक्लेयर हो गया कि डिले इज द बेसिस फॉर कम्यूटेशन, करेक्ट, तो बुलर का केस में when it came before the 3-judge bench, same Justice Satashivam, same principle. One question the judge asked, how much is the delay? So many years delay. Yeah. What is your explanation? Some weak explanation they give. They don't have any explanation. Commutate. Was there any cross questioning happening at that much. time? Not much. Not much. Just Main fight happened in Shatrughan Chauhan case. Then government lawyers fought. But after they lost Shatrughan Chauhan, then no point in arguing anymore. right. So then they gave up after that. So going from here, we all know Professor Devinderpal Singh Bhullar is an innocent man, Yes. wrongfully convicted, Yes. and he's still behind bars Yes. after 15, 20 years almost now. Yes. Do you think there will be any justice where he can be a free man? See, my feeling is after 2-3 years, he will get remission and he will come out. You My think feeling is his health is very bad. he his got health is very tortured bad. very badly? Yeah, his Have health you is met very bad. Mr. Bhullar? No, I've never met Mr. Buller. But his health is bad. But God willing, he will come out. And his wife is fighting for him every day. Yeah. Very strong woman she is. Powerful woman. She is struggling for him every day. So God willing, he will come out. On the other side, in Punjab, many fake encounter happened. Many disappearance. बहुत नौजवानों का जो disappearance है वहाँ पर हुआ पंजाब में. And I would say you probably went through all India and you probably been to many cases, not just in Punjab but many other places where these killings are still happening, and it's still happening in Punjab. Do you think there will be any justice system or any justice for those parents, brothers or sisters? See, I am very pessimistic that in India you can get justice for people of communal riots, killings by the police. I am very pessimistic. हालांकि मेरा पूरा दिन सुबह से रात तक मेरा काम ऐसा ही है. I do not stop working, I do not slow down. लेकिन जो मैंने देखा, जो मैंने खुद महसूस किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, हमारा लीगल प्रोटेक्शन सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सिस्टम बहुत ही कमज़ोर है. I am fighting, for example, for the people from Manipur. The widows of the deceased, the widows of the people who were killed, they have prepared a report of 1,534 cases of fake encounters and disappearances. Just look, and I want the people from the Punjab to understand that the civil war which took place in 1984, the attack on the Sikh community in 84, Delhi, in the Punjab, killings in the late 80s, killing in the 90s. The civil war which started against the people of Punjab by the state versus people of Punjab. That civil war has expanded to the whole country. In Manipur, 1,534 documented cases. Can you imagine? It came before Supreme Court. Supreme Court ordered an inquiry headed by a Supreme Court judge. That inquiry report is now published. And it says they took 7 cases
test sample. जी. In none of those 7 cases was it a genuine encounter. Every encounter was a fake encounter. And second, not one of the alleged terrorists killed was a terrorist at all. Can you believe it? Not one of the persons killed was a terrorist. They did not even have a previous criminal record. I was listening to your speech last night where you described one of the incident where you were in the court and you were doing cross examination with the one of the senior military officer. Can you shed some light on that, please? Well, there were many cases. You see, senior military officers, senior policemen are never required to testify in court. Never. They claim impunity. No, we cannot be questioned, we cannot be asked to file affidavit. Here the commission called them. And the commission said, come, step in the witness box. Tell me what happened. And I gave an example yesterday. I'll give you that example today. Shall I give you the example Yeah, go ahead. again? Yeah, feel free. It was a very classic case. The officer came proudly in the witness box. He said we had barricaded the road. We saw 2 men coming towards us from a particular village. और हमने कहा रुको रुको. ये लोग रुका नहीं. They kept coming. मैंने दोबारा कहा रुको रुको. शर्ट से उन लोगों ने पिस्तौल निकाला, फायरिंग शुरू की और भागने का कोशिश की. Then I ordered my men to open fire. They opened fire and killed them. Who were these people? They were dreaded terrorists of फलाना gang का नाम दिया. Dreaded terrorists of so and so gang. Okay. So we asked him in cross-examination कि साहब ये तो खतरनाक आतंकवाद लोग थे. You are sure? Yes, I am sure. अच्छा. और उनका नाम मालूम है? जी, नाम मालूम है. क्या नाम था इन लोगों का? फलाना नाम दिया, फलाना नाम दिया. 2 लोग थे. तो आपने चेक किया कि ये तो ड्रेडेड टेररिस्ट थे उस संगठन का? Yes, sir. We have checked. We are absolutely sure. अच्छा. You have a list of all the terrorists in Manipur? पूरा लिस्ट है आपके पास? हाँ साहब, लिस्ट है. तो इन लोगों का नाम उस लिस्ट पर है? So I don't know. You have a full list? And you don't know if the names are on? No, I don't know. You have seen the list? No, I have not seen the list. आपका कोई बड़े ऑफिसर ने लिस्ट देखा? I don't know, sir. आपने किसी के पास ये लिस्ट देखा? लिस्ट ऑफ टेररिस्ट. आपने किसी के पास ये लिस्ट देखा? नहीं साहब, मैंने किसी के पास नहीं देखा. तो आपको मालूम कैसे कि ये लोग ड्रेडेड टेररिस्ट थे? उनका नाम आपको मालूम है? हाँ साहब, मालूम है. लिस्ट है आपके पास? हाँ, लिस्ट है हमारे पास. तो हाउ डू यू नो नाउ दैट दीज आर द ड्रेडेड टेररिस्ट? अगर इनका नाम लिस्ट के ऊपर नहीं है तो हाउ डू यू नो? क्योंकि साहब उस गांव की तरफ से आया. मतलब नहीं साहब, लोग कहते हैं कि उस गांव में बहुत सारे टेररिस्ट हैं. क्योंकि उस गांव के तरफ से आए इसलिए हमने डिसाइड किया कि डेफिनेटली दे आर टेररिस्ट. So I say anyone who comes from that village you will shoot dead. Yes sir. Anyone who comes from that village you will shoot dead. Yes sir. Why? Because in my heart I know that they are terrorists. So they have their own measurements to anybody that they see as a terrorist. So this is the way you deal with life in India, in Manipur. मैंने ये इसलिए आपसे सवाल पूछा कि ये बात जो है ये पंजाब में बार बार 1000 बार हुई और लाखों बार हुई. और वो ऑफिसर इंस्टेड ऑफ गेटिंग कन्विक्टेड, gold medal, they got gold medals, president medals, and they got promotions. We'll take a short break. मिलते हैं एक ब्रेक तो बाद.
ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਸਾਂਝਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਕੀ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? Is there any justice system or law and order works in India? We're talking with Dr. Colin Gonsalves. So डॉक्टर साहब, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि कैसे ये डिसअपियरेंस एंड जो केसेस बनाए जाते हैं किसको आतंकवादी बना देते हैं और कैसे आतंकवादी बनते हैं, और just without any information or solid reason anybody can get shot and tagged as a terrorist. कुछ छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुए और मैसेकर्स हुए. This happened not just with Sikhs, it happened in Gujarat. जो मैसेकर हुआ, it happened in Chhattisgarh, it happened in Assam, it happened in Odisha, where in Gujarat Muslim 2000 से ऊपर मुस्लिम का कत्ल हुआ. असम और उड़ीसा में 200-300 से ऊपर जो क्रिश्चियंस हैं उनका कत्ल हुआ. How these things are happening when there's all kind of laws, forces, police, and the chief ministers. Yes. I'll tell you why it's happening. On the law part, what do you see in I'll this? tell you why. 84 is an experiment. Kill 3,006. Then in the villages of Punjab, you kill another 2, 3, 4, 5, God knows how many thousand young boys. Legal system keeps quiet. Hundreds of thousands. Hundreds of thousands. Yes. Legal system keeps quiet. It is an experiment. Social experiment of the state and security forces. If we can kill without punishment, then we can replicate this model anywhere in the country. Sikhs were the laboratory. Punjab and Delhi were the laboratory for the testing of this theory. Kill with impunity. Happened in Punjab. Nobody is punished. No officer is punished. No policeman is punished. No inquiry is going on. No investigation is going on. No judge is getting upset. Promotions happen. Promotions are happening. Presidential medals are being awarded. Experiment succeeded in Punjab. 92 Bombay riots. 3,000 Muslims killed. Justice Sri Krishna comes out with a brilliant report saying this is the party responsible. This is the party responsible. They are all in power today at the center. Naming the persons. No action. Experiment continuing. After the Bombay riots, there's a Bombay bomb blast. Right. Some majority people are killed there. Criminal system starts to work. Fast track court, death sentences. It happens. So minorities are the victims. The system goes to sleep. True. Majority are the victims. The system works fast. Yeah. Right till Supreme Court. Quick. Everybody's in jail. Some have got death sentences. Life imprisonment. Then 2002 Gujarat, again same story. Experiment continuing again. 2007 Kandamal, 80%, 85% acquittals. Experiment continuing. 100 people killed, experiment continuing in Kandamal. Then you come 2013 Muzaffarnagar, UP, experiment continuing. 100 people killed. And then you go 2013 Assam, killing of Muslims, again experiment continuing. No police officer will be killed. No person from these fascist organizations, no person will be touched. The experiment is successful. When the minorities come under attack, the courts will be silent. When the majority section comes under attack, the courts will be active. That is the rule. Now you look at the conflict areas like Chhattisgarh. Tens and thousands of tribals are in jail. Tens and thousands. No legal aid, no help, torture inside jail, torture of women. Take Soni Sori's case. She was a tribal woman who, along with her nephew Lingaram, she took a camera, she took photographs.
Security forces had come and burnt the village, killed the men, raped the women, robbed the chickens, burnt the houses. Right. That's what she did. They tried to encounter her. She ran into the jungle, she escaped, she came to Delhi. They arrested her from Delhi. I tried to save her, I failed. They arrested her from Delhi and then they took her to Chhattisgarh. And in custody, they sexually abused her. According to her, the officer who sexually abused her, she gave the name. Then we find that that same name, that officer has got President's Award. last year. Whether it's true or false, we will find out now, but that is the story that she has. Then we go to Supreme Court. Supreme Court says take her medical examination. In the medical examination, the hospital report says 2 stones in her vagina, pushed deep in her vagina, 2 stones in her anus. Suffering pain. Then they remove and she's all right. And then the Supreme Court grants her bail and she's out on bail now. And defiantly she joined Aam Aadmi Party, and in Chhattisgarh she's forming the Aam Aadmi Party and mobilizing on behalf of Aam Aadmi But Party. was there any order from the court to do further investigation? That case is going on now before the Supreme Court. We want a special investigation team to look into this allegation. That case is now going on before the Supreme Court soon. Okay. So let us see what happens. But in Chhattisgarh again, Chhattisgarh, Jharkhand, Orissa, parts of Madhya Pradesh, parts of West Bengal, killing in the conflict areas. Why? Why? Because the minerals are there. The wealth of India is there. Right. And the tragedy of India is that the poorest people, the Adivasis, live on the richest of the land. इनको यहाँ से हटाना कैसे? जी. वो अपने आप तो नहीं जाएगा. उनकी ज़मीन से प्यार है, उनका जंगल से प्यार है, उनका नदी से प्यार है. They keep it pure. These are the cultured people of India. People say, no, Adivasis are uncultured. This is the cultured people of India. So Native people. They love their land, they love their forest, they love their water. They will not leave. So then the security forces will come. And behind the security forces are all these big steel companies, iron ore companies, aluminium companies, all of them. So security forces are fighting for whom? The Home Minister says they are fighting for the nation. They're not fighting for the nation. They are fighting for these companies. Our security forces have become the bodyguards of the multinational companies. That's all. And fighting against them is whom? The naked Adivasi. Naked Adivasi. Right. हम जमीन नहीं देगा, हम नहीं देगा. Last तक हम नहीं देगा. We will die, but we will not give. So what does the government say? What does Manmohan Singh say? These are terrorists. These are Naxalites. These are the enemies of the nation. Who? Who are these Naxalites? All naked. Naked tribals. Right. Naked tribals, illiterate tribals. Having no food in their stomachs, no books in their houses, no medicines when they are sick. The naked people of India. And what is their crime? What is the crime of Naxalism? That they are saying, we will not give our land. Right. You come with your guns, we'll come with our guns. We will not give our lands. That is All these जो जितनी भी killings होती हैं, पंजाब में भी हुई, गुजरात में भी हुई, असम में, उड़ीसा में, कश्मीर में, सब जगह चल रही हैं. Do you think it's sort of political twist to get to the parliament and get to the higher post? See, it is a successful model today. मोदी का जीतने से ये लेसन है हमारे लिए कि ये सक्सेसफुल पॉलिटिकल मॉडल है. डिवाइड एंड रूल. माइनॉरिटी वोट से हमें मतलब ही नहीं है. इट डजंट मैटर मिले या ना मिले. मिला तो अच्छा है, नहीं मिला तो हमारा कोई परवाह नहीं है. इफ द मेजॉरिटी वोट इज कंसोलिडेटेड, वी डोंट केयर फॉर माइनॉरिटी वोट एंड माइनॉरिटी ओपिनियन.
मुसलमान क्या कहता है, मुसलमान का क्या ग्रीवियंस है, सिखों का क्या ग्रीवियंस है, क्रिश्चियन लोगों का क्या ग्रीवियंस है, आदिवासियों का क्या ग्रीवियंस है, हमें कुछ मतलब ही नहीं है. कंसोलिडेट द मेजॉरिटेरियन वोट, डोमिनेट, डिवाइड, dominate. That is the model of India. So what has happened to Indian democracy? I was going to say that. What has happened to Indian democracy? Yeah. People say it is alive, democracy is alive, free press. All the press is owned by the corporations today. All the press, every channel, every newspaper. Sorry to say, Yeah. but sorry to interrupt you. There is a new video that from American, one of the channel from America. वो इंडिया में गए, उनका एक रिपोर्टर इंडिया में गया, उसने वो लाइव शूट किया कि कैसे मीडिया वहाँ पर you pay your money and how you can get your news, no matter is it true or not, and you can see those clips that's happening all over the place. Paid news, well known. Yes. You don't pay a journalist also nowadays. Yeah. You tell your journalist, आप न्यूज़ लेकर आना, उसमें से मैं एक हिस्सा आपको दे दूंगा. तो he gets some advertisement, 10,000, 20,000 rupee advertisement, उसको न्यूज़ का रूप में ये करेगा. Then they'll put it as news, and some out of 20,000 rupees, he'll get 5,000 rupees, and 15,000 will go to his channel. Okay. We're coming towards the end now. Yeah. As a senior lawyer, what do you think the system should work so the normal person can get some justice? See, as long as the political system remains like this, the legal system will not change. The legal system will change only if they see political upheaval. Suppose Kejriwal were to win many seats in parliamentary election, then the judges would say something is happening. The people are voting for change. You understand? As long as the judges see that the political system is very conservative and repressive, then to some extent the judges also become like that. Which is already happening. Yeah, the people have voted कि ये system ठीक है, ये दमन ठीक है, ये oppression ठीक है, सब कुछ ठीक है, no problem. 3,000 people die in Gujarat, and yet that chief minister can become prime minister. So what is the lesson for India? That the people are saying, okay. People are saying torture, execution, disappearance, discrimination, hunger, everything is okay. The judges also become little sust. Judges also become slow. Suppose Kejriwal were to become prime minister today. Shake the country. This is wrong, this is wrong, this is wrong. If he had shaken the country, the judges would have become alert. So, do I see any chance of change in the legal system in the next 10 years? I don't see any chance. I don't see any chance. Because the political system, the repressive political system has won, people say, has won the mandate of the people. What mandate? 30% vote. 30% vote. Mandate of the people. But that is how people will think in the judiciary. He has got the mandate of the people. Suppose I were to take up case about killings in Gujarat to Supreme Court or to High Court. Will anybody entertain these cases against Modi or against the BJP? No chance. The people have spoken. This repression is all right. They agree with what happened, and They agree. They agree. It was right to dominate the Muslims in Gujarat. We were right to dominate the Muslims in Bombay. We were right to do against the Sikhs. These are all terrorists, this, that. Stigmatize them. The people have spoken that oppression is all right. So that is the situation now. To live in India has become very dangerous. last question. We always question the justice system, but on your opinion, what's the people's responsibility or the public's responsibility? See, the people in India are fighting for their rights, let me tell you. No matter what has happened in these elections, the people of India, the ordinary people of India are fighting for their rights. They are not giving up. That is the beauty of India.
The beauty of India lies in the ordinary people who, although they have no food in their stomachs, they have such courage and they are so generous that until their last breath they will fight and resist oppression. So do not underestimate my message to the world and to people in Canada. Do not underestimate the people of India. They have great beauty and great courage. Their voices are not heard. That is another issue, but they have great courage. And it will take a long time. Maybe in my lifetime I will not see the change in India. But that change will come through a very big revolution. People will rise in anger against this tyranny. But when people rise, they're tagged as a terrorist. Let them be tagged. People are not bothered by tags. Once your mind and your heart is pure, that I personally will not engage in violence and I will not ask others to engage in violence. But if you come to attack me, I will resist. What does the Adivasi say? आप हमारी जमीन लेने का कोशिश करेगा, मैं आपको पीछे कर दूंगा. But I will not engage in violence and I will not promote violence. As long as your heart and mind is poor, nobody can touch you. It doesn't matter. People are fed up. You see, you are overplaying the hand. Everybody you will call militant, terrorist, Naxalite, Maoist. Now nobody is bothered. Call me whatever you want. I am going to resist tyranny. If resisting tyranny is Maoism, I'm a Maoist. If resisting tyranny is militancy, then I'm a militant. You call me. Call me whatever. That reminds me of the words of Sanjhi Singh Pindramal. He was saying, he used to say the same thing. I am fighting for the people's right. You want to call me terrorist? Call me terrorist. Call me whatever you want. And I want to send a message to the people of Canada. You must reach out to the people in India. You have come from a beautiful and glorious country to a country of peace in Canada. But don't relax. Don't slow down. The struggle for human rights is an international, global struggle. And you must not rest until you see India at peace again. Sikhs at peace, Adivasis at peace, members of the Northeast at peace. Every human being in India should be at peace again. India should have a restoration of democracy. Do not rest. Please do not slow down until you see India at peace again. Reach out to India. Visit India. Volunteer in India. Come for 1 month. Young students in Canada, reach out to India. Come and do seva in India for 1 month. Come back. Be foot soldiers of the human rights movement from Canada. Make it an international movement. That is my plea. That is my call to the young in Canada. Last question. As you are an active senior lawyer for human rights and everything, do you get threats and everything that Mr. Kalora, he gave his life, and you're going on the same path? Do you get the threats and everything else? See, some of our units got some death threats at some stage. I don't want to go into details, but some of our units got. And sometimes we get told some things. But what can we do? This is our life. This is our work. This is the only thing we know how to do properly. If I were a civil engineer, if I had followed with civil engineering, I would have been a very bad civil engineer. But as a human rights activist, I know I'm a decent human rights activist. So this is the only thing that God has taught us to do. And so we have to do. In the seva of people, we have to do this again and again and again. Till the end. That is our life. I do not wish for anything more actually. I'm happy like this. So thank you for coming to our studio. आपने अपना बहुत कीमती समय हमको दिया और हमारे साथ बातचीत की,
मिस्टर बुल्लर के बारे में और ह्यूमन राइट्स के बारे में जो वायलेशन हो रही है इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेसी में। वी विश यू गुड लक। आप और भी हिम्मत से काम करें एंड whenever you come to Canada, please feel free to come to our studio and share your views and how you work and how your organization work and where you are. And thank you so much for coming to our studio. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. So, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ, ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ, ਬਾਈ ਲਾਜ਼, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲਿਨ ਗੰਜ਼ਾਲਸ, ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਲਾਇਰ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਾਫੀ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਫਰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੋ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ, ਫੋਨ ਕਰੋ। ਗਿਵ ਅਸ ਯੂਰ ਵਿਊਜ਼ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਇਟ ਮੋਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਬੈਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਪਿਕਸ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਨ, ਪਲੀਜ਼ ਸੈਂਡ ਇਟ ਟੂ ਅਸ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।